Jamie, this is now a very most talked about topic. Half of the people are in favor of night watchmen, the others are not. What's your take on this? Does Test cricket need night watchmen, or should we send up our batters because they are batters? It's their job to bat. I mean, in theory, what is the role of a night watchman? And I think it's changed over the years. अब शुरुआत में वही था कि अगर 10-12 गेंदे स्टंप से पहले कोई सेट बैट्समैन आउट होता है और उनसे भी महान बैट्समैन आने वाला है या कोई बैट्समैन जिन्हें आप वैल्यू करते हैं, यू वांट टू शील्ड हिम. इवन एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू वंडर, बट आप एक सस्ते बैट्समैन को या एक टेल एंडर को भेज रहे हो जिनकी बैटिंग अच्छी नहीं है, आप किसी और बैट्समैन को आप उनसे शील्ड, you want to shield that batsman, right? If that guy behind is not good enough to come out in fading light or in twilight or on a dodgy pitch, what's he going to do tomorrow? Of course, morning mein environment can be different, but the whole concept to me makes no sense. And then one fine day, Jason Gillespie goes at night watchman and scores a double hundred, and us din ke baad maine kaha ab to is concept ko bhool hi jao, right? It doesn't make sense. What are you saying? There are no cracks. No bowler is spitting venom. Who's the next batsman due in, right? Is that guy not good enough to come out and face 7, 8, 9, 10 minutes of bowling, which is not hostile? I mean, what happened from the time Akashdeep came out? Virat Kohli played a shot he's been playing for 4 years, right? बाकी किसी बैट्समैन को खतरा नहीं. I don't understand why night watchmen or even used, because ज्यादा आकाशदीप क्या करेंगे? 18 मारेंगे, 20 मारेंगे, 25 मारेंगे, होगा क्या? This is, you cannot be depending on the bowlers to come and score your runs. So very strange, and I don't know why you're shielding Pant and Jadeja and Nitya. You played all these guys to extend the batting, और जब 2 विकेट गिरते हैं, आकाश जा बेटा पैड अप कर ले. क्या बकवास है यार ये. Yeah, absolutely. And Taus, what's your take on this? What's your thought? Okay, do we need a night watchman in Test cricket? No, depending on the situation, like again, Jamie Bhai said it completely. Like last के 10-12 minutes है तो बात अलग है. I mean, or maybe the 10-12 deliveries, not even 10-12 minutes, because what your regular batter cannot do, what a night watchman can do exactly. I mean, you don't have to lose the wicket, right? What if you lose that particular wicket and then suddenly you're down like 5 wicket down or 6 wicket down? You will lose another batsman. Don't you trust your batters, your regular batters? Yeah. तुम्हारे अगले आने वाले बंदे, तो वो डाउट्स क्रिएट करता है. बट देन अगेन, फॉर दिस, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ बॉल्स, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ओवर्स, मिनट्स अवेलेबल, और मे बी व्हाट आर द कंडीशन इन द स्काई, हाउ इज इट गोइंग टू बी ओवरकास्ट. तो डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. तो यहाँ पर इस वक्त सॉरी जरूरत नहीं थी, अभी जरूरत नहीं थी. बट देन दिस concept is something that can be used anytime, because it's captain's whims and fancies, and it's his strategy. You cannot just do away with one perfect, that you didn't like this particular guy or this concept, and then you do away with it. It all depends what is needed in that particular moment. और आकाशदीप की जरूरत नहीं थी ये पर्टिकुलर सिचुएशन में. जब आपके पास 20-25 मिनट का खेल है, इसमें आकाशदीप की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी. And I don't know what Rohit Sharma was thinking, or maybe he was thinking that with the inning that he played in the last test match, the sixes that he executed, he could have done. But then these guys have been in form. They were on top of the situation, they were on top of the players. They had got Yashasvi Jaiswal, they had got Virat Kohli, and then it could have been different कि यार अगर ऋषभ पंत आ जाते, ठीक है, लेटर स्टेज पे आए, बट अगर आ जाते, वो चले जाते, तो और ज्यादा बड़ा धक्का लगता. तो एटलीस्ट अभी ये सेफ है कि यार आकाशदीप गए, ना कि ऋषभ पंत या जडेजा. तो आप दो एस्पेक्ट से देख सकते हैं. क्या देखना है आपको कि यार पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, बट डिपेंड ऑन द स्ट्रैटेजी व्हाट यू वांटेड टू यूज. मे बी दे वांटेड टू शील्ड अगेन. जेमी भाई ने बोल दिया परफेक्टली कि यार यू हैव टू शील्ड योर बेस्ट बैट्समैन, एंड लास्ट के 10-15 बॉल में आपको एक बकवास डिलीवरी पे भी एक अच्छा बैट्समैन गंवाना नहीं मंजूर होता है, राइट? व्हेन योर थिंग्स हैव हैपेंड. आकाशदीप को गवा लो, ऋषभ पंत के अगर नहीं गवा सकते तो